Currently, there is a lot of debate on whether Gautam Gambhir is the right choice to be the coach of the test team for India. Let's dive deep and try to assess what experts and fans have to say. Gautam Gambhir warned India fans won't be patient if side loses series versus England. They're expected to win every time. Former England skipper Michael Atherton pulled no punches while weighing in on the mounting pressure facing India. As India gear up for a must-win clash at the Oval in the final test of the Anderson Tendulkar Trophy, head coach Gautam Gambhir finds himself under increasing scrutiny. With England leading the 5-match series 2-1, a loss in the final test would not only hand India their third successive test series defeat but also cast serious doubts over Gambhir's long-term future at the helm. Former England captain Michael Atherton didn't mince words when assessing the pressure on the Indian setup. Atherton said, "Well, they've lost 2 series in a row. They lost at home to New Zealand 3-0, and they lost the Border Gavaskar Trophy 3-1. If they lose this series, then yeah, he's under pressure as a coach." For a team with India's resources and cricketing depth, patience often runs thin. The stakes are not just about salvaging a series but about meeting sky-high expectations that come with the job. India, with all their resources, their population strength, they're not a team that people are patient with. They're expected to win every time they walk onto the park. So 3 test series defeats in a row would be a problem for him, Atherton added. Gambhir's tenure. Gambhir, who took over the reins in what many saw as a bold, results-driven appointment, had a seesaw tenure with India, achieving successes in whiteball cricket but failing to make a mark in tests. Under Rohit Sharma's captaincy, the side won the Champions Trophy earlier this year but also lost the Border Gavaskar Trophy 3-1. Before that, India faced a whitewash at home against New Zealand. Adding to the inconsistency on the field is the off-field friction that erupted on the eve of the Oval Test. Tensions flared between Gambhir and Kennington Oval pitch curator Lee Fortis, reportedly over denied access to inspect the pitch from close quarters. The altercation has only added fuel to an already simmering contest, with India desperate to level the series and England aiming to close it out in style. The style of coach that you require for the different formats. And if you actually look at, you look at Baz McCullum, who's this free spirit, and I can't imagine Baz is a big data person, going sitting next to the computer. He just manages people and makes sure that that person arrives in the dressing room, not to say as a free spirit, but with an attitude to go out there and enjoy the game and take the game on. If you actually look at his record so far in white ball cricket, it's not that great. Whereas Gautam Gambhir, Andy Flower, in my opinion, over the course of the last 20 years, he's probably the best coach going. Very analytical, very data-driven. That is what white ball cricket is now. Whereas Test cricket, you could argue, it's more about managing the person on a day-to-day basis and making sure that their attitudes, mentality is right for this hard game, the 5-day game. So I just look at Gautam and think, analytically he's brilliant in T20 cricket, white ball cricket. The man management side of the job, it might be an area that he can improve upon. तब वो कह रहे कि भाई एज एन एक्सपर्ट तो ठीक है, बट जब आप एज कोच आए हो तब वो सोच क्यों नहीं ला रहे हो कि स्पेशलिस्ट जो आपको मैच विनर्स है, जो मैच खोलेंगे, या फिर ऑलराउंडर्स में बिल्कुल प्योर आपको पता हो यार ये क्वालिटी मैच विनर है, एक स्किल पर जिताएगा। आपने वही होता ना कि थोड़ी सी बैटिंग बढ़ा लो, थोड़ी सी बॉलिंग बढ़ा लो। तो डार्क नाइट जी का वही सवाल है कि गौतम गंभीर के लिए वो पूछ रहे हैं कि भाई उनका क्या है पैरामीटर, उनकी जजमेंट जो है वो कैसे होगी। आज जैसे जजमेंट डे की बात हम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीजी का कोई परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है या बस 0 परफॉर्मेंस पर वो पूरा टेन्योर कंप्लीट करेंगे। ये मैच भी बीइंग रियलिस्टिक इज लॉस्ट, 2 विंस इन 12 टेस्ट। और इंडिया ने बाय द वे कल से लोग लगातार बोल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट इतिहास में शायद ऐसा नहीं हुआ कि 3 सीरीज लगातार हारी हो। आप घर पर व्हाइट वॉश हो गए, कभी नहीं हुए थे घर पर, आपकी ऐसी भद कभी नहीं पिटी है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप आपका बीजीटी लाइव था, पहली बारी आपने लाइफ में बीजीटी के बाद जो है WTC फाइनल नहीं खेला, क्योंकि वहां पर आप चांस था रियलिस्टिक बन सकता था। जो आपने पहले न्यूजीलैंड में मरवाया, फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में तो और बुरी तरीके से मरवा दिया वो चांस। फिर आपकी जो तीसरी सीरीज है इंग्लैंड वाली, यहां पर आप डाउन हो 2-1। ये भाई जब आप अनश्योर, मैं पहले भी इस चीज पर मैं बोल रही है मैंने बात, और आज भी अपने स्टांस पे भाई हमेशा मेंटेन करूंगा वो चीज। जो भी गौतम गंभीर के टैक्टिक्स हैं वो वाइड बॉल क्रिकेट के लिए आइडियल हैं। जो आप मिक्स एंड मैचेस करते हैं, आप कॉम्बिनेशन अपना अलग अलाउ करते हैं कि यार मेरे को ये यूटिलिटी ज्यादा दे देगा, मुझे यहां पर ज्यादा चाहिए, मुझे बैटिंग हैवी चाहिए, मुझे बॉलिंग हैवी चाहिए, बैलेंस चाहिए, वो आपका T20 ODI में वर्क कर जाएगा एंड इट इज वर्किंग। मैं उस चीज के लिए हमेशा अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन गौतम गंभीर इन रेड बॉल क्रिकेट हैज बीन अ फेलियर। आप इस चीज को अगर भाई मैं कह रहा हूं आप एक एक मैच के बेसिस पर करुण नायर को 3 मैच के बाद आपने राइट ऑफ कर दिया ना,
तो मैं कह रहा हूं अगर आप फिर शुभमन गिल की पहली टेस्ट सीरीज है एज कैप्टन, मैं उनको क्लीन चिट इस बेसिस पर दे सकता हूं, लेकिन गौतम गंभीर का टेन्योर अब इतना हो गया है कि मैं जजमेंट पास कर पाऊं। आपको क्या, आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में देखा, आप कभी भी ओपन करवा, चलो आपके कोई खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके 2 खिलाड़ी बाहर, 3 खिलाड़ी बाहर, कभी 4 चेंजेस हो रहे हैं, कभी 3 चेंजेस हो रहे हैं कि भाई नीड ऑफ द आवर है, अभी कॉम्बिनेशन वैसा बनाना पड़ेगा। गौतम गंभीर साहब से भी मेरा ये भाई रहेगा क्वेश्चन, और आई थिंक आज दुनिया भी पूछेगी, अगर ये मैच आप हार गए तो 3 बैक टू बैक सीरीज जो इंडियन इतिहास में 100-150 साल में नहीं हो रहा भाई, तो आपको, आप भाई अकाउंटेबल हैं फिर उस चीज के लिए। जो कह रहे हैं इसमें कोच क्या करे यार, बोलिंग अच्छा नहीं, यार कोच की तो जिम्मेदारी होती है, कोच ने सेटअप बनाया, कोच ने खिलाड़ी को बैक करा है। मुझे यार अब दुनिया भर के मैं वही देख रहा हूँ कि लोग जब भी आप देख रहे हो कि हमेशा कमेंट्स में वही, सोशल मीडिया पर वहीं पर टैग्स, वही गौतम गंभीर की क्लिप आ रही है, वही गौतम, उसमें खुद भी जैसे आपने कहा, उन्होंने खुद ही बोला कि वनडे वाइड बॉल क्रिकेट में चल जाता है, बट यहाँ नहीं चलता।